बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सआदत, सियासत, इबादत है इल्म, हुकूमत है, दौलत है, ताकत है इल्म। ए इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं है खजाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना। A very good morning to all of you. Dear participants, a new day dawns upon our national conference, bringing with it renewed energy and anticipation. I, Dr. Hina Hassan from MANUU College of Teacher Education, welcome you all to the second day of our national conference. We are delighted to extend a warm welcome to each and every participant, esteemed guest, our dignitaries for joining us on this second day of national conference. Your presence, be it online or offline, continues to enrich our discussions, and we look forward to another day of collaborative discussions. We are truly privileged to have among us respected distinguished dignitaries whose insights and presence will surely enrich our discussions, inshallah. It is with great honor that we extend a warm welcome to our distinguished guest on the stage. We are privileged to have the esteemed Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, Professor Syed Ainul Hasan sir. Today we are having with us a visionary leader whose guidance has been instrumental in steering our university to new heights. Under the leadership of our VC sir, our university has been awarded a commendable A+ grade in the NAC inspection last year. His dedication to academic excellence and innovation continues to inspire us all. Please join me in expressing our heartfelt appreciation as we applaud the exemplary leadership of our esteemed Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hasan sir. And I request Professor Sadaqat Ali sir, organizing secretary of this conference, to present a bouquet to sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Dear participants, our next distinguished guest contribution to our Department of Education and Training deserve admiration. Please join me in welcoming to the stage the esteemed Head of the Department of Education, Professor Shaheen Sheikh Altaf ma'am. We look forward to her valuable insights and guidance on this occasion. I request Sadaqah sir to please felicitate Professor Shaheen. Thank you, sir. Thank you, ma'am. It is with great pleasure that we welcome our next distinguished guest to the stage, the headmistress of Shaheen Group of Institutions, respected Meher Sultana ma'am, a dynamic leader and visionary. Her contributions have significantly impacted the educational landscape of Educational Group of Shaheen Group of Institutions. Please join me in extending a warm welcome to Meher ma'am. Please, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Dear participants, as we commence this session, we would like to start with a moment of reverence and reflection. We invite Nehal Ahmed, B.Ed. 4th semester student, to recite some verses from the Holy Quran, setting a tone of serenity and inspiration for our proceedings. स्टेज पर जलवाबार इज़्ज़त माब लाहिक़े सदर एहतराम हुजूर शेखुल जामिया साहब, दिगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. اردو ٹرانسلیشن. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی قسم اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم، اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم. بے شک ہم نے انسان کو بہتر بنایا، یعنی اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا. پھر ہم نے اسے پس سے پس تر حالت میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان کے لیے دائمی اجر ہے. پھر اس کے کون ہے جو آپ کو دین کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ شکریہ. MashaAllah. He is Nihal Ahmed. He is our distinguished Quran reciter from B.Ed 4th semester. Dear participants, it is with great enthusiasm that we invite you to experience a special musical creation, the Tarana of our university. Our Honorable Vice Chancellor Sir has personally composed our university Tarana, a masterpiece that captures the essence of our university. I kindly request the technical team member, Janab 𝐄𝐻𝐳𝐧 sir from IMC MANUU to play the university Tarana for us. Please, sir. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. علم و کمال فضل و شعر و شعور تک پھیلی ہے دل نواز مہک دور دور تک. ملتا یہاں نصاب ہے سارے جہان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. ہر نقش و رنگ
درسگاہ کی ہے یہ بھی جستجو، سب فاصلہ مٹاتے چلو درمیان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ غرب و جنوب سے ہو کے شرق و شمال سے آگے بڑھو، خیال ملا دو خیال سے، چرچا ہو کائنات میں ہندوستان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ فصل صدا بہار سے بستی بسی رہے، مل کر دعا کرو کہ یہ کھیتی ہری رہے، سایہ رہے سروں پہ کسی سائبان کا، آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ The verses of this tarana reflects the harmony that characterizes the academic community of Maulana Azad National Urdu University. Dear participants, our talented B.Ed students have prepared a melodious welcome song to set the tone for this memorable occasion. Let's give them a big round of applause as they lead us in welcoming our distinguished guests. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لائے ہیں یہاں تشریف، ہم مشکور ہیں، کیا کہیں ہم آپ سے، ہم کس قدر مسرور ہیں، ہو گئی ہم کو میسر میزبانی آپ کی، آ گئے صد مرحبا ہے مہربانی آپ کی، بچے بچے کی زباں پر ہے کہانی آپ کی، رنج و غم جتنے تھے سب دل سے ہمارے دور ہیں، آپ لائے ہیں یہاں تشریف، ہم مشکور ہیں، آپ کیا آئے کہ لگتی ہے زمیں بھی آسماں، گھر میں سنتا کون آ کر غمزدوں کی داستاں، صدق دل سے کہہ رہے ہیں
ہو گئے ہم شادمانی سے ہمارے آج دل معمور ہے. آپ لائے ہیں یہاں تشریف ہم مشکور ہیں. نا خدا کہلائے جائے یہ تو قابل آپ ہیں. ہو ہمیں طوفان کا ڈر کیوں جب کہ ساحل علم کی شیدائی ہم ہیں. شمع محفل آپ ہیں. زخم محرومی کے سب مہکے ہوئے کافور ہیں. آپ لائے ہیں یہاں تشریف ہم مشکور ہیں. کیا کہیں ہم آپ سے ہم کس قدر مسرور ہیں. MashaAllah, very good. Dear participants, I would like to invite the organizing secretary of this national conference, Professor Sadaqat Ali Khan sir, for his welcome speech. السلام علیکم. بہت ہی خوشی کا آج موقع ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے شیخ الجامعہ موجود ہیں اور ایک سب کی بڑی تمنا تھی کہ سر وزٹ کریں اور یہاں پر ہم بیدر میں آ کے CTE بیدر کو دیکھیں. تو سب سے پہلے میں اس موقع پر سر کا آپ سب کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں اور سر کی طرف سے جو یہ ہمیں تعاون ملا اور یہ پروگرام ان کی پرمیشن کے ہی بدولت یہاں تک ہم پہنچے ہیں تو اس کے لیے یہ بار بار ہمارے شکر کے گزار ہوں. دوسرا جو HOD میڈم پروفیسر شاہین شیخ الطاف بیٹھی ہیں ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ میڈم آپ ایک بار آئیے اور یہاں پر CTE بیدر دیکھیے اور شاہین کا بھی وزٹ کیجیے. تو انہوں نے ہمارے انویٹیشن ایکسیپٹ کیا اور وہ بھی آج موجود ہیں. مانو CTE بیدر کے فیملی کی طرف سے میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. اور شاہین کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, شاہین ہمارے ساتھ ہیں, ہم شاہین کے ساتھ ہیں. تو مہر میڈم یہاں پر موجود ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر آف شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن. اور آپ کو ایک بات یاد دلا دوں, کل قدیر صاحب ہمارے ساتھ تھے, آج میڈم ہمارے ساتھ ہیں اور ان دونوں کی ہی بدولت یہ اتنا بڑا پیڑ یا جو آپ کو دکھ رہا ہے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن, ان کے 17 بچوں سے انہوں نے شروع کیا تھا اور جو آج یہاں پر اس پوزیشن پایا ہے تو میں ان کا بھی مانو CTE بیدر کی فیملی کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے بھی ان لوگوں کا بھی ہمارے ساتھ جو ہے تعاون رہے گا انشاءاللہ. اور ادھر بیٹھے ہیں ہمارے پیار ہوں عبدالرحمان صاحب, وہ بھی شاہین میں ہی اب ہیں, لیکن پیاروں کا آپ جانتے ہیں مقصد کہ مطلب کیا ہوتا ہے, پہلے ٹچ ہوا کرنا اس کے آگے آگے بڑھنا. تو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور میں ان کا بھی مانو CTE بیدر کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے کچھ لوگ ریسرچ اسکالر یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر بلال کالج اور وومنس کالج کے یہاں اسٹاف بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, ان کا بھی میں مانو CTE بیدر کی طرف سے خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی بات کو پورا. شکریہ. Thank you, sir. Dear participants, it's now an esteemed moment as we move forward towards the felicitation of our distinguished guests. Please join us in honoring our dignitaries for their invaluable contributions to our event. It's my honor to invite Professor Sadaqat Ali Khan sir, Principal CTE Bidar, for the felicitation of our President, Vice Chancellor sir, Professor Syed Ainul Hasan sir. May I invite respected Meher Sultana ma'am to kindly step forward for the felicitation of Professor Shaheen Sheikh ma'am, Head of Department, Education and Training, Maulana Azad National Urdu University.
Now, I would like to invite Professor Shaheen Sheikh ma'am for the felicitation of Meher Sultana ma'am, Director, Shaheen Group of Institutions. Dear participants, the moment we have all been eagerly anticipating has arrived. It's now time to hear from our esteemed guests who will share their valuable insights and expertise. Without further ado, let's delve into the enriching discussions ahead. Dear participants, it's an honor to invite the Head of Department of Education and Training, Maulana Azad National Urdu University, Professor Shaheen Sheikh ma'am. Her wealth of knowledge and leadership have been instrumental in shaping our academic journey. For her formal introduction, I would like to invite Dr. Bondu Raju sir, Assistant Professor, CTE Bidar. Honorable guests and respected participants, it gives me a great pleasure to announce our distinguished guest for this conference, Professor Shaheen Sheikh Altaf, in front of you today. The guest has held various positions at Maulana Azad National Urdu University, including Head of the Department of Education and Training, Academic Coordinator, Provost for Girls Hostel, Deputy Dean for Student Welfare, and Professor. She has also served as a lecturer, associate professor, member of E-Forum, resource person for Intel and NCTE, chairman of MED Moderation Committee, coordinator for Cambridge International Centre, and moderator for B.Ed program. Throughout her career, she has 32 years of teaching experience in teacher education. Madam has published 17 research articles in peer-reviewed and UGC care journals. She authored 4 books related to ICT in education and language teaching. And she also contributed 4 chapters related to ICT and NEP 2020 and choice-based credit system in edited books. And Intel Master Trainer course, Intel Advanced Master Trainer course, Cambridge International Diploma for Teachers and Trainers Program Leader course from University of Cambridge through online. Her dedication to ICT-based and English language teaching has significantly impacted the University of Pune product-based community language teaching program for English effectiveness. Madam, a renowned researcher, has guided 55 MEd and 3 MPhil and 1 PhD student, has been a driving force in ICT and language education, invited keynote speaker, held technical sessions, and received awards for her teaching and research. Our guest insights and experiences will enrich discussions on language teaching and ICT in teaching and learning, addressing challenges and promoting a more integrated teacher education program. We are honored to have Professor Shaheen Sheikh Altaf join us today and eagerly anticipate her valuable insights. Thank you. Thank you, Bondu Raju sir, for that excellent introduction. Respected Chief Guest, Professor Syed Ainul Hasan sir, our Honorable Vice Chancellor, Principal of CTE Bidar, Professor Sadakat Ali Khan sir, Meher Madam, and the Principal of Shaheen School, I think, and all the guests, all the faculty of CTE Bidar, and all the students. A very good afternoon to all of you. I know it's a bit late, but still we are starting the program. First of all, I would like to congratulate Professor Sadakat Ali Khan sir for organizing this 2-day national seminar, and especially on a topic which is related to ITEP. I think everybody knows that we have started the ITEP course at the Department of Education and Training only this year. We inaugurated the session in September. The formal inauguration was conducted in October. I think 9th of October, we had the program for inaugurating the ITEP course.
And let me tell you that we are successfully running the course. We have already completed the first semester examination, and the results have also been declared. And we are now moving forward with the second semester. And as the topic of the seminar is embracing the perspective, embracing the ITEP program, and exploring the perspectives and challenges, I would like to tell you that there has been a continuous change in the teacher education program over the years. I think till 2015, we had 1-year B.Ed program. From 2015 onwards, we moved onwards towards the 2-year B.Ed program. And from 23, as per NEP 2020 recommendations, we are implementing the 4-year ITEP program. And our department and our university has been selected as one of the pioneering institutions to conduct the pilot project. We have been facing a lot of challenges and also successes, because I'm not going to talk only about challenges over here. There are a lot of successes that we have had. And I think some of the reasons for our success is that MANUU had already implemented the 4-year UG program also from 2023 onwards. And that was one major contribution which helped us in running the ITEP course, because without the 4-year UG program, we could not have run the ITEP course. So that was one challenge, not challenge, I think it's an advantage that we faced. One more advantage that we had is the cooperation from all the schools. The School of Commerce, the School of Sciences, the School of Social Sciences, and the School of Languages. Without their cooperation and coordination, I don't think we would have been able to implement this ITEP program successfully, because it's basically integration of education with the regular disciplines. And that was only possible through their cooperation and coordination. One more reason I find for the success of our ITEP program is the dedication of our faculty, sir, and all the audience. The dedication of our faculty. One major challenge that we faced when we were trying to implement the ITEP program was the timetable, because we had to integrate the courses. We had the classes of education and we had the classes of the discipline-specific subjects also. And how do we go about it? Because their timetables are fixed and our timetable was also fixed. So I think the one plus factor was our faculty, who agreed that in spite of the university timetable starting from 9 o'clock, they were ready, eager and willing to start the timetable for the ITEP course from 8 o'clock onwards, so that we could have a sync between our timetable and the other departments' timetables. So that was also one of the reasons for the success of our ITEP program. I think one more reason for the success of the ITEP program is our ITEP coordinator, Dr. V.S. Sumi. She has actually been facing a lot of challenges, and day-to-day challenges are being solved by her. Like how to set up the timetable. Even the exam timetable was a big challenge for us, because we had to sync the examinations of the departments as well as our department. So that syncing was also done by Sumi madam, of course. And we also have our, stream-specific coordinators, Dr. Samad, Dr. Sumaya, and Dr. Kuluri Elisha, sir, who have also been instrumental in running the ITEP course successfully at our department. We also had a lot of problems when we were entering the marks, when we were entering the internal assessment marks, the external examination marks, and how to go about incorporating our students were like they had to study approximately 10 plus subjects. And
10 subjects is a really heavy workload for our ITIP students. And how to sync all of those into one particular mark sheet was also a challenge, assigning the course codes, etc. So all those challenges were looked into and addressed. And with that, I can say that we have successfully completed the first semester and the results have also been declared. Now we are going forward with the second semester. This semester also, I hope, should go very smoothly. The main challenge is going to come up in the next semester when the students are going to take up 2 major subjects, like 1 major, 1 minor, plus education major. So that challenge, we will address it. We are working on it, and we will try to smooth out the process as much as possible. I think in future, the future of the ITIP program, the first thing that we need to do is to create an awareness amongst all the students who are doing their 12th, 10th and 12th standards. Okay, there is such a course in India where you can do integrated BA B.Ed, because I think awareness is still not at the optimum level. That's why we had, out of 150 seats, we were able to admit only 52 students. So next year, we will try to overcome that challenge by running some kind of awareness programs for the ITIP course. One more challenge which we will face, I think, in future when these students pass out will be placement. And we had recently conducted a meet with the NCT officials, and they have given us assurance that they will look into this matters of placement, because right now there is no other, qualification called BA B.Ed, which is where they are eligible to teach in a school. Of course, we have time. We have 4 years of time by the time this particular batch graduates. So with in that frame of time, I hope that that challenge will also be addressed, and there will be a special placement for these BA B.Ed, BSc B.Ed and BCom B.Ed students. One more thing that I really feel is that ITIP has really contributed towards specialization. As you all know, ITIP has 4 stages of specialization. It has brought the ITIP course on par with the medical and engineering. Right now, when we went around the school, every student said that they want to become a doctor. Okay, but I think in future, we will come up with some students at least who will say that they want to become a teacher. And as our ITIP students have said, that this ITIP course of theirs is by choice and not by chance. So we want to develop that ITIP as a professional course with specializations. Specialization in foundation, specialization in middle stage, preparatory stage, middle stage, and secondary stage. Right now, we have started with the secondary stage, and VC sir, I hope that in future we will also target the foundational stage, because that is the new element in NEP 2020. Where we are targeting the students from 3 to 6 years old and bringing them into the schools. So I think in future, we will endeavor to start the foundational course also, BA B.Ed foundational, instead of just sticking with the secondary stage. So these are our visions for the ITIP course. And as the very famous saying goes, the destiny of India is being shaped in our classrooms. And that is very true. And I think NEP 2020 has taken just the right step over here, because they have visualized that the classrooms are the most important ingredient in any nation's success. And specialized teachers, professional teachers are the ones who are going to really help in bringing the nation forward. And I think we are on the path to achieving that state of excellence. That's all I have to say. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such an enriching and insightful address on ITIP. Your address not only illuminated the positivities and complexities of ITIP, but also provided a roadmap for transformative changes in teacher education. Thank you. Thank you so much, ma'am.
It's an honor to invite respected Meher Ma'am, Director, Shaheen Group of Institutions, to the dais for her address. For her formal introduction, I would like to invite Dr. Mohammad Azim Sir, Assistant Professor, College of Teacher Education, Bidar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद अनिल-अज़ीज़ साहब और प्रिंसिपल साहब, मुझे जो है तारुफ़ कराना है, तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मैडम महर सुल्ताना मैडम बहुत ही जो है, जब से शाहीन जो कायम हुआ है बुनियादी तौर पर फाउंडेशन रही है मैडम, और बहुत ही मुखलिस होकर उन्होंने इस इदारे को ठहराया है, इसका पौधा लगाया था। वो जो पौधा जो है आज हमारे सामने नज़र आ रहा है, बहुत ही लहलाते हुए एक बाग की तरह हमारे सामने नज़र आ रहा है। बहुत ही मेहनत, बहुत ही जो है मुखलिस बनकर एक कौम की खिदमत का एक जो ओहदा लिया था, उन्होंने तय किया था, जो अहद लिया था उन्होंने उसको पूरा करके दिखाया है। और रोज़े अव्वल से ही जो है ये शाही इदारे से जुड़ी रही हैं और अपने चेयरमैन साहब खदरी साहब के साथ जो है कदम ब कदम आगे बढ़ती रही हैं, और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इसी तरह वो कदम ब कदम बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने मानूक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं, हमारा बहुत ही ताउन किया है उन्होंने हर वक्त, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन के सिलसिले में, फासलाती तालीम के सिलसिले में उन्होंने बहुत ही ताउन दिया है। इसके अलावा टीचर ऑफ कॉलेज एजुकेशन के सिलसिले में भी उन्होंने बहुत से हमारा ताउन दिया है और बहुत ही जो है मुखलिस बनकर हर वक्त हमारे साथ रही हैं। तो ये इस तरह का उनका तारुफ था, और वो अपनी बहसन खूबी खिदमत अंजाम दे रही हैं इस शाही इदारे के लिए और कौम की खिदमत के लिए और समाज की फलाह बहबूदी के लिए बहुत से उन्होंने काम में अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया मैडम। थैंक यू मैडम। डाइस पे तशरीफ़ फरमा प्रोफेसर, चीफ गेस्ट मैडम शाहीन और हमारे सदाकत अली सर, आज़मी सर, और यहाँ पर लेक्चरर्स और बनने वाले टीचर्स और सारे टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो 2 रोज़ा जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात हो रही। इत्तेफाक मुझे कल सदाकत सर बोले कि मैडम आपको कुछ बताना है, सर नहीं है, सर की गैर मौजूदगी में आपको आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आपको बताना है। तो मैं समझती कि यहाँ पर एक चीज़ हमारी, एक क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया, उसको पूरा करना है, क्योंकि टीचर्स के लिए ज़रूरी है वो। आमतौर पर ये सवाल आता है कि जो बच्चे वीक होते हैं उनको पढ़ाने के क्या मेथड्स हैं। तो अक्सर रिमीडियल टीचिंग, स्पेशल कोचिंग, ऐसे हर टीचर्स हर साल कोई नया मेथड्स लाके बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस रख के। तो ये सारी कोशिश हम करने के बाद 15 साल से हमको एक ये हम सर्च किए, बच्चों की ज़रूरत को पूरा किए और हमको तजुर्बा होता गया। बच्चों की ज़रूरत क्या थी कि वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स बेसिक नहीं समझते, लिहाजा वो क्लास में वीक होते हैं। तो उनको डायग्नोस किए, हम उनकी बीमारी को समझे और फिर उसके ऊपर उसका इलाज किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान भर से जितने भी ड्रॉप आउट और वीक बच्चे हमारे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे के पूरे अल्हम्दुलिल्लाह वो परफेक्ट होके अपने क्लास के काबिल बन के क्लास में नंबर 1 पे है। तो वो मुख्तसर सा मेरा तजुर्बा आपके सामने मैं रखूंगी कि हमारे ये शाहीन के दौरान 34 साल के अरसे में हम लोग बच्चों की ज़रूरत को कैसे पूरे किए और किस तरीके से ये इदारे में तरक्की हुई। बस एडमिशन्स के वक्त स्टार्टिंग में जैसे भी हमारे पास एडमिशन्स होते थे, बिल्कुल वीक बच्चे 8, 9, 10 के स्टार्टिंग से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल कहीं नहीं पढ़े या ड्रॉप आउट हैं, किसी होटल में काम कर रहे, ऐसे बच्चों को हम बुला के उनके एज के हिसाब से उनको बेसिक नॉलेज दिए
और रेगुलर क्लास में डाले। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका बड़ा असर हुआ और हिंदुस्तान भर से हमारे पास आज ड्रॉप आउट भी आते हैं और उसके साथ साथ 15 साल से हाफिज बच्चों के लिए हम कुछ कोशिश किए। स्टार्टिंग में हम अपने आपको सिर्फ हमारा अपना तजुर्बा बता रहे, तालीमी पॉलिसी, न्यू तालीमी पॉलिसी के अलग अलग मेथड है वो है, लेकिन मैं मेरा अपना तजुर्बा बता रही आपके सामने क्योंकि ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है और इसको पूरा करना जरूरी है क्योंकि बीमारी बच्चों की अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हाफिजों के लिए हम कोशिश किए। एक हाफिज बाहर से हिफ्स कंप्लीट करके जिसकी उम्र थी 14-15 साल की, वो शाहीन में कदम रखा आज से 15 साल पहले। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि हिफ्स के बाद ये बच्चे को कुछ असरी तालीम दिला दीजिए। सर के पास आके बात किए तो सर उस बच्चे को मेरे पास लाके छोड़े कि देखो इसको किस तरीके से इम्प्रूव करते एज के हिसाब से। तो स्पेशल मैं उस बच्चे को, मुझे आइडिया था ड्रॉप आउट को पढ़ाने का, उस बच्चे को मैं स्पेशल क्लास में बिठा के पढ़ाना शुरू की। तो वो हाफिज बच्चा इतना जल्दी कैच किया, 8 दिन में कन्नड़ा सीख लिया, 8 दिन में, सिर्फ 8 दिन में। और 1 महीने के अंदर जो रेगुलर बच्चे जो 10th के काबिल, 10th में जो बच्चे हैं उस काबिल 1 महीने में बन गया वो बच्चा। क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है टीचर, जो बच्चा जिस लेवल से सीखता उसको उतना तेजी से उसको आगे बढ़ाते, ना कि नहीं बस इतना सिलेबस 1 महीने में इतना पढ़ाना, 2 महीने में ये कंप्लीट करना, ऐसा कुछ भी नहीं। बस बच्चा जिस लेवल से सीखता उसको तेजी से आगे बढ़ाना और उसकी काउंसलिंग करना, उसको शौक दिलाना। बस ये मेथड से वो बच्चा 1 महीना 2 महीने में बच्चा 10th के काबिल हो गया। डायरेक्ट मैं रेगुलर बच्चों के साथ 10th में डाली और वो बच्चा फर्स्ट क्लास 10th का रिजल्ट आया। इत्तेफाक से ऐसी बैठे हुए थे, सर के पास कोई हरियाणा के एक साहिब आए, आके सर को बोले कि ये सर उसके सामने बच्चे का तारुफ कराए और बताए कि ये हाफिज बच्चा ऐसा हो गया, हमको हाफिजों के लिए कुछ करना है। तो बोले कि बिहार, हरियाणा वगैरह में हाफिजों की तादाद बहुत ज्यादा होती, हम बच्चों को लाएंगे। तो वो सर यस बोले, हर चीज को सर यस बोलते। वो 22 बच्चों को ट्रेन से भेज दिए और वो 22 बच्चे बिल्कुल बड़ी बड़ी उम्रों के 17-18 साल के बच्चे, हाफिज बच्चे आ गए। जब वो बच्चे शाहीन में कदम रखे तो सारे लोग ये बोले कि अरे सर ये बच्चों को लाके यहाँ का माहौल क्यों खराब कर रहे, बिहार के बच्चे बड़े बदमाश होते, वहाँ के ऐसे रहते, अच्छे माहौल को क्यों खराब करें। तो सर बोले नहीं, हाफिज बच्चे हैं, उनको सही रहबरी करना है। वो बच्चों को लेके एक क्लासरूम में मेरे पास लाके बता दिए कि देखो ये बच्चों को कैसा तैयार करते। मुझे आइडिया था, मैं उनकी वो रूम के सामने मैं अपना टेबल डाल के ऑफिस छोड़ दी मैं, और वो बच्चों की क्लासरूम के सामने मेरा टेबल डाल दिया और वो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज बच्चों का कोई टेस्ट वगैरह लेने की जरूरत नहीं रहती, वो बड़े टैलेंट होते, बड़े अच्छे ज़हीन होते वो बच्चे, क्योंकि हिफ्स कंप्लीट करते, उनके सीने में हिफ्स रहता, उनका दिमाग उतना ताकतवर रहता। 2 महीने में रेगुलर बच्चों के बराबर आ गए वो बच्चे। 10th का एग्जाम दिए, पूरे के पूरे फर्स्ट क्लास है। अब बस उनकी जस्ट निगरानी थी। और वही जो लोग निशाना बनाए थे कि फलां बच्चे बदमाश रहते, लेकिन वो बच्चे बाअखलाक, क्योंकि उनको एक सही रास्ता मिल गया था। जब वो बच्चे हिंदुस्तान भर में डिवाइड हो गए, चले गए यहाँ से 11th-12th करके, कोई मेडिकल, कोई इंजीनियरिंग, कुछ ना कुछ अपने फील्ड में आ गए, तो कंटिन्यू हमारे पास हिंदुस्तान भर से बच्चे हर साल आते रहे। इस साल करीब 1200 हाफिज बच्चे यहाँ पर आए, जिसमें से 700 ऐसे बच्चे जो कभी मदरसे स्कूल नहीं गए थे, उनको कुछ भी मालूम, कभी मैथ्स, इंग्लिश या लैंग्वेज कोई चीज वो देखे नहीं थे, सिर्फ मदरसे से फारिग होके आए। तो उन बच्चों को हम 1 महीना 2 महीना AICU, अभी हम 8 साल से ये हम फाउंडेशन कोर्स का नाम AICU रखे, एकेडमी इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU आप लोग जानते हैं ना, हॉस्पिटल में होता है ICU। ICU क्यों रखते, क्योंकि वहां पर स्पेशल केयर होता, वहां पर नर्स वहां पर 24 घंटे रहते, डॉक्टर्स का विजिट 24 घंटे चलते रहता, और उनका सारी बीमारी का रिकॉर्ड होते रहता, इम्प्रूवमेंट है या दवा से, या फिर उस दवा काम नहीं करी, बहरहाल उनको स्पेशल केयर होता, क्योंकि वो बड़े बीमार होते।
یہ بچے بھی بیمار ہیں کسی سبجیکٹ میں, کسی وجہ سے کمزور ہیں, بیمار ہیں, تو ان کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہے. اکیڈمی انٹینسیو کیئر یونٹ, وہاں پر 6 بچے یا 7 بچے اور ایک ٹیچر انڈیویجول ہر بچے کو فوکس کر دے, اور بچے کے لیول کے حساب سے, ہر بچے کو الگ الگ سیکھنے کا لیول الگ ہوتا, کوئی بچہ سلو لرنر ہوتا, کوئی فاسٹ, اس طریقے سے بچے کے لیول کے حساب سے اس کو سکھاتے. لیکن حافظ بچے الحمدللہ اچھے ہی رہتے, ایک 8-15 دن میں ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ تیزی سے سیکھتے. تو ایسے 700 بچوں کو ہم 2 مہینے میں امپروو کر کے NIOS 10th کا سلیبس اسٹارٹ کیا. ابھی VC سر ابھی دیکھے اس کو کہ ہمارے بچوں کو یہ 8-10 مہینے میں کس طریقے سے بچوں میں امپروومنٹ آیا. اور وہ 10th کا سلیبس NIOS بورڈ کا سائنس, میتھس, انگلش, یہ آل سبجیکٹ وہ پرفیکٹ ہو کے اب ریویژن کر رہے ہیں. ابھی 10th کا ایگزام اپریل میں دینے والے ہیں. تو لاسٹ ایئر کا جو بیچ تھا, ہم بچوں کو ایسے تیار کرتے کہ ایگزام دیتے وقت عام طور پر مدارس میں NIOS بورڈ کا جو ایگزام دیتے نا, تو مدرسے کے جو ذمہ دار ہوتے وہ جہاں پر ایگزام سینٹر ہوتا وہ لوگوں کو کچھ پیسے وغیرہ دے کے کر کے ایڈجسٹمنٹ کر لیتے کہ ہمارے بچوں کو کاپی کا موقع دیا اور بچوں کو پاس کر دیا. کیوں کرتے؟ کیونکہ ان کو جسٹ 10th کا سرٹیفکیٹ دینا رہتا. لیکن شاہین کا مقصد یہ نہیں ہے, بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے, بچے کو قابل بنانا ہے. اصل ضرورت بچے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, بچے کی ضرورت اس کو قابل بنانا ہے. ایسے کر کے وہ لوگ سرٹیفکیٹ دے کے بھیجتے ہیں. ہمارے پاس کئی بچے 10th پاس بھی آتے, پاس ہو کے آتے, فلاں جگہ سے ہم ایگزام دیے, ہم 10th پاس ہیں, لیکن ہم یہاں پر ان کا ٹیسٹ لے کے دیکھے تو 0. لاسٹ ایئر کے بیچ کو ہم اتنا پرفیکٹ بنا کے یہاں پر جو سینٹر تھا, اس سینٹر میں ہمارے ٹیچرز کو بول کے بھیج دی تھی کہ ہمارے بچوں کو کاپی نہیں کرانا. ہم پورا سینٹر تک بھیجنے تک ہماری ذمہ داری ہمارے ٹیچرز کی کہ پورا ان کو فزیکل چیک کرنا, اور سینٹر میں ہم بتا دیے کہ قطعی ہمارے بچوں کو کاپی نہیں کرانا. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے, ارے یہ کیسا, یہ انسٹیٹیوٹ والے ہر جگہ سے لوگ آ کے بتاتے کہ کاپی کرو, اور یہ تو سختی سے بول رہے کاپی نہیں کرانا. تو ٹھیک ہے, اب میں یہاں پر بچوں کو یہ تاکید کر کے بھیجتی ہمیشہ ایگزام سینٹر کو جانے سے 2 دن پہلے, دیکھیں بیٹے اتنی ہم محنت کریں, ہم کو دھوکہ دینا نہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دینا نہیں ہے. آپ کو جو آتا وہ لکھنا. جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں سارے پوائنٹس جو آپ کے ٹیچرز پڑھے وہ سارے چیزیں آپ کے ذہن میں آتی. اگر کسی وجہ سے کوئی بچہ کسی سبجیکٹ میں نہیں لکھ پایا تو آپ ویسی پیپر دے کے آنا, کاپی نہیں کرنا. اس لیول تک ہم بچوں کا ذہن بنا کے بھیجتے. وہ تعجب کرے سینٹر والے کہ یہ ایسے کیسے شاہین کے بچے پورے حافظ بچے ہیں اور ایسا لکھ رہے. وہ بعد میں فون کر کے بتا رہے کہ میڈم ایسی کیسی تیاری ہے. تو اس میں کیا ہے, بچوں میں کانفیڈنس آتا. ابھی وہ جو بچے جو پاس ہو کے گئے کالج پری نیٹ میں, الحمدللہ ریگولر بچوں سے آگے. تو اصل میں ٹیچرز بچوں کی ضرورت کی طرف نظر دوڑائیں. کوئی پالیسی کی اہمیت نہیں ہے. ٹیچر اگر ٹیچر ہیں, بچوں کا حق ادا کرنے والے ہیں, تو وہ سارے چیزیں جو آج ہم چاہ رہے ہمارے بچوں کے لیے وہ آٹومیٹک ٹیچر کے ذہن میں آتے. ہم جب فیصلے کرتے رہتے ہیں بچوں کی ضرورت کیا ہے, کون سے بچے کو کیا چیز ہونا ہے, وہ جب ہم اس کو ڈائگنوز کرتے. پھر بعض بچے پڑھنے میں اچھے رہتے لیکن کسی وجہ سے ڈپریشنز میں رہتے. تو جب ٹیچر اس کو محسوس کریں گے, اس کو قریب بلائیں گے, اس کو کاؤنسلنگ کریں گے, اس کی وجہ معلوم کریں گے, تو ہی ہم اس کا علاج کر سکتے. تو یہ ہر اسکول میں ہر ٹیچرز کو اتنا کامن سینس ہونا چاہیے کہ بچے کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہم کو کون سے ٹیکنیک کو اختیار کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ جو سسٹم ہے شاہین میں, اب 1200-1500 بچے حافظ یہاں پر پڑھے, کئی ڈراپ آؤٹ آ کے امپروو ہو کے. ابھی نیچے کا جتنے بھی ہمارے کلاسز ہیں پورا AICU چلتا اسٹارٹنگ میں, پھر وہ جنرل میں چلے جاتے بچے. ابھی سر کو لاسٹ ایئر یہ خیال آیا کہ اگر اس طریقے سے ہم رزلٹ دیں گے تو پورے ہریانہ, بہار, UP میں ہزاروں کی تعداد میں بچے حافظ بچے نکلتے. پورے کے پورے اگر ادھر دوڑ لگائیں گے تو ہمارے پاس شاہین میں جگہ نہیں رہیں گی.
पूरा अगर बीदर भी अगर खरीद लिए तो जगह नहीं बस होंगी, इतने हाफिज हैं। तो हम क्या करेंगे, उनके अपने जहाँ भी मदारिस हैं वहां पर मदरसा प्लस शुरू करेंगे। हम हिफ्स प्लस बोल के चला रहे थे, वहां पर मदरसा प्लस स्टार्ट करेंगे। सर के दिमाग में जो ही जब भी जो बात आती वो फौरी उसका इम्प्लीमेंट करना शुरू करते। अल्हम्दुलिल्लाह 34 साल से जो इरादा करे उसका इम्प्लीमेंट, और अल्लाह की मदद, वो वाकई मेहनत करते रहते। उनके अगराज़ मकासिद में पूरे पॉइंट्स थे कि असरी तालीम और दीनी तालीम को हम लेके चलेंगे। अब इस पॉइंट को लेके पूरे हिंदुस्तान के मदारिस का दौरा किए, वहाँ के मुंतज़िमीन से बात किए और वो लोग भी तैयार हो गए। और मदरसा प्लस में जितने मदारिस अब 54 सेंटर में मदरसा प्लस चल रहा, वो हमारी अपनी रहबरी में, अभी उसको मैं ही देखती हूँ, उसको ऑनलाइन वगैरह क्लासेस वगैरह उनके चलते रहते। फिर हर बच्चे का प्रोग्रेस वगैरह, AISU कितने महीने चला, फिर उसके बाद 10th का सिलेबस कितना, यहाँ से हम ईयर प्लान बना के भेजते हैं और क्या पढ़े। एक एक कभी कभी वीडियो कॉलिंग करके किसी बच्चे से भी मैं बात कर लेती। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे यहाँ चल रहा वैसे ही हर मदारिस में काम हो रहा। तो 2000 बच्चों की खिदमत हम कर रहे मदरसा प्लस। हर मदारिस में जितने जहाँ के मुंतज़िमीन इस बात को तैयार हुए, खुश हुए, खाने और रहने का इंतज़ाम उस मदारिस के ज़िम्मेदारों का रहेगा, और टीचर्स का एकेडमिक पूरी जिम्मेदारी शाहीन उसको निभाएंगे। लास्ट ईयर रमज़ान में, इस साल रमज़ान में ये सर इरादा करने के 1 महीने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किए। 250 टीचर की ट्रेनिंग यहाँ पर हुई, यही कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो 250 टीचर्स की ट्रेनिंग, फिर उसके बाद उनको अपॉइंट किए, 54 सेंटर में भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हम पूरा रमज़ान बस यही काम के पीछे रहे। रमज़ान की बरकत, अल्लाह की मदद, आज 54 सेंटर में 2000 बच्चे जो कुछ भी नहीं जानने वाले, जीरो, सिर्फ हिफ्स कंप्लीट करे हुए बच्चे आज अंग्रेजी मैथ्स वगैरह अच्छी तरीके से पढ़कर उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा। मैं बच्चे से पूछी कि बेटे बिहार गई थी मैं इत्तेफाक से, तो वहाँ के सेंटर में जाके, बेटे आप यहाँ आने से पहले आपका कुछ प्लान होगा ना, कुछ तो आपके जहन में बात थी, तो बताइए आपके जहन में क्या बात थी। तो बच्चा खड़े हो गया, बोला कि नहीं मैं हिफ्स करने के बाद ये या किसी मदरसे में जाके मैं भी हिफ्स का टीचर बन जाऊँ या हिफ्स पढ़ाने वाला बन जाऊँ। तो अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों आए आप? तो हम देखे कि ऐसा ऐड देखे, यहाँ हाफिज बच्चों को पढ़ाते और डॉक्टर बनाते, बच्चों को असरी तालीम से जोड़ते, लिहाजा हम यहाँ आए। तो आने, अच्छा आप 2-4 महीने में क्या सीखे? मैं बहुत कुछ सीखा। अब आगे आपका क्या प्लान है? किसी मदरसे में जाके दीनी मदारस में क्या आप कोई मुदरिस बन जाएंगे? तो बच्चा बोला नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। तो उनकी सोच बदल गई बच्चों की, थोड़ी सी मेहनत पर। तो ये बड़ा अच्छा काम है, अभी सारे हिंदुस्तान में भी हो रहा, और इंशाल्लाह अभी कर्नाटक के जितने भी मदारिस हैं उस मदारिस में भी हम ये मदरसा प्लस का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे। जैसे आमतौर पर पहले भी मदारिस में NIOS बोर्ड से बच्चों को पास कराते, सर्टिफिकेट देते, वैसा नहीं। मकसद हमारा एक ही है कि बच्चे को काबिल बनाए। उसके बाद बच्चा अपनी लाइफ में जो चाहे कर सकता, जॉब कर सकता, डॉक्टर बन सकता, बिजनेस कर सकता। एक बच्चे को इल्म का शौक दिलाना, उसको इल्म देना, ये जो उसकी उम्र है, उस उम्र में सही काम करना, ये हमारा मकसद है। ये आज की ज़रूरत है। टीचर्स इस ज़रूरत को पूरा करें, और जितने भी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ भी एक AISU होना ज़रूरी है, क्योंकि हर क्लास में बच्चा किसी ना किसी सब्जेक्ट में बीमार रहता। उसकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हर स्कूल में एक AISU होना है। मैं ऐसी जितने भी हमारे स्कूल सेंटर्स हैं वहाँ पर AISU है। क्लास 8, 9, 10 में कोई बच्चा मैथ्स में वीक रहता, कोई कन्नड़ा में वीक रहता, खैर ज़रूरी उसके ऊपर इतना बर्डन सिलेबस का डाल देते कि बच्चा उल्टा डिप्रेस हो जाता, सारे चीज़ें सर पे से चले आते। हम उस बच्चे को AISU में बिठा के उसकी कमजोरी को दूर करते। सिलेबस की फिक्र नहीं बच्चे को। अभी गुलबर्गा में हमारा इस साल नया सेंटर स्टार्ट हुआ, स्कूल स्टार्ट हुआ, वहाँ 8th और 9th में बोर्ड एग्जाम है, मालूम है ना, 8th और 9th की। तो सर बताए कि बोर्ड एग्जाम की कोई अहमियत नहीं है।
बच्चा जब तक काबिल नहीं बनेगा उसको आगे नहीं बढ़ाना। अभी सारे क्लासेस को AICU में डिवाइड कर दिए और वो बच्चों को वहाँ से इम्प्रूवमेंट के बाद वो बोर्ड एग्जाम देंगे। वैसे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि किसी को फेल करना नहीं है, हमको धोखा भी देना नहीं है, गैर जरूरी बच्चों को धोखे में रखते। तो ये हमारी अपनी कोशिश है। सर इसके पीछे बड़ी मेहनत करते, अगर सर रहते तो और भी आपको बहुत सारी बातें बताते थे, लेकिन इस पहले दिन से मैं सर के साथ शाहीन में जुड़ी हुई हूँ। हम 17 बच्चों से स्कूल स्टार्ट किए। आपको मालूम होगा कि 17 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, हमारे भाई के 2, महल्ले के 2, ऐसा बैठे बैठे हम सोचे कि माहौल बीदर का बड़ा खराब था। 34 साल पहले तालीमी मियार जीरो, बिल्कुल इतना बिगड़े हुआ था कि जानते होंगे आप बीदर का रिजल्ट भी आज से 7, 8, 10 साल पहले PUC का रिजल्ट आता था तो एक भी बच्चा पास नहीं, पूरे फेल, कोई इदारा अच्छा नहीं। हमारे घर के बच्चों को हम दूसरे मदारिस में इधर गुरु नानक इधर शरीक करें, लेकिन वहाँ कुछ हम फैसला नहीं कर पाए कि बच्चे उल्टा बिगड़े। तो जब यहाँ हमारी फैमिली वो बीदर के बड़े फेमस बिजनेसमैन समझो, अच्छे घराने के, पैसा टका हर चीज, तो हम लोग इतना खर्च करने के बाद हमारे बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं, तो बीदर के माहौल के हिसाब से गरीब गुरबा के लोग कैसे पढ़ेंगे, आने वाली नस्ल कैसी होंगी, ये चीज अपने जहन में रख के सर उस जमाने में BE करके आए। मालूम है ना, उस जमाने के इंजीनियर बड़ा डिमांड था। आप क्या है, हर घर में 4 इंजीनियर हैं, वो पूरे बीदर में 1-2 इंजीनियर होते थे। वो जमाने में इंजीनियरिंग करके अपने प्रोफेशंस को चेंज कर दिए, यहाँ की ज़रूरत को महसूस किए। हमारे वालिद साहब वालिदा उनको कोऑपरेट किए कि बिल्कुल जो चाहे आप कर सकते। फिर वो ये काम में लग गए, अपने असातिज़ा से मशवरा किए, बीदर के ज़िम्मेदारों से और भी लोगों से मशवरा करके स्कूल स्टार्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह 17 बच्चों को आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, दिसंबर में हम स्कूल स्टार्ट किए। नवंबर 15 तारीख को सोचे और दिसंबर 1 से, कई दुनिया में स्कूल स्टार्ट कब होता, जून में, लेकिन सर की आदत, आज अगर कोई चीज़ अच्छी जहन में आती तो कल उसका इम्प्लीमेंट होना, वो कोशिश ही यहाँ तक ये कामयाबी के रास्ते तक लेके आई। जब अच्छा काम करने में जल्दी करना, ये हदीस भी है कि कोई अच्छा काम जहन में आता तो उसको करने में जल्दी कर रहा है ना। तो दिसंबर में हम 17 बच्चों से स्कूल स्टार्ट किए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा स्कूल बंद, हॉलीडेज शुरू हो गए। जून में 100 एडमिशन्स आ गए। वो जो 17 बच्चों का जो रिजल्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजल्ट ही एडवर्टाइज हो गया। उस जमाने में थोड़ी मोबाइल थे, कुछ भी नहीं था, कोई सहूलत नहीं थी, वो ऑटोमेटिक वो इतना लोग हमारे सिस्टम को, सर के प्लानिंग को, मेरा वहाँ पर इन्वॉल्व रहना बहुत पसंद किए। और हमारे पास देखते देखते 2-4 साल में हजारों की तादाद में बच्चे बढ़ गए। और आज तक शाहीन के रिकॉर्ड में एडमिशन के लिए कोई भी किसी भी टाइप का बच्चा आया तो हम उसको वापस नहीं करते। जहाँ पर अच्छे इदारे होते वहाँ पर बच्चे की उसकी तालीम, उसके घर का माहौल, वो सारी चीज़ें चेक करके लेते। यहाँ नहीं, बच्चा अगर बदमाश भी है तो मालूम हुआ कि अरे फलां बच्चा बड़ा शरीर है, ऐसा किया वैसा किया, वो स्कूल में उसकी हम काउंसलिंग करके उसको इम्प्रूव करते उसका। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमसे खिदमत लिया और ये जो मसाइल और उसका हल आज के दौर में जो हम महसूस कर रहे हैं आपके सामने रखे। इसके ताल्लुक़ से आप तमाम के जहन में कोई बात है तो आप बाद में भी आके AICU के ताल्लुक़ से आप उसको देखें, उसको समझें, जहाँ भी आप जाएंगे टीचर बन के उसका इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मैम। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। Before the presidential address of our VC sir, I would like to invite Shabnam Parveen, research scholar from Department of Education and Training, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, for her paper presentation. And the title of her paper is Integrated Teacher Education Program, a Critical Analysis.
डाइस पे मौजूद वाइस चांसलर सर, ओके, डाइस पे मौजूद वाइस चांसलर सर एंड तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ साथ तमाम सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। It is a joint paper with my supervisor Professor Mushtaq Ahmed Patel and with other research scholar MD Akif Haider. My paper entitled Integrated Teacher Education Program, a Critical Analysis. When we focus on the etymology of the word education, it is taken from the Latin word educare or educatum, which means to bring up or to come out, which indicates that education helps an individual to come out with the best that exists within oneself. The narrower meaning of education can be considered as the purposeful activity for the development of individual, while the broader meaning of education considers the social, emotional, and spiritual development of individual, which leads to the development of an individual at personal level and national level. My study generally focus on the three questions. What are the major steps taken for restructuring the curriculum by NCTE? What is meant by high quality teacher? And the third one, what are the merits and the challenges for the in the implementation of ITEP course? Education can also be considered as the process or a product. Mostly the expert consider it as the product, and it is the outcome of multiple conscious and refined effort. But somehow it is also considered as the process because it is an act of unfolding conscious cognition, critical thinking, creativity, culture, and ethical understanding and understanding of oneself. From the above discussion, it is clear that education helps in all-round development or holistic development of an individual. The NEP 2020 focuses on the holistic development of individual, which is only possible when they gain training from the most learned personality from the society. Teachers are the backbone of our nation and contribute to the development of nation by shaping the generation. Therefore, teacher education must be qualitative in nature, such that it includes the guidance under the best mentors. According to NEP 2020, a teacher must be well equipped with best values, knowledge, ethos, as well as master over the subject and pedagogy. For the implementation of ITEP, NEP 2020 suggested NCTE to take major steps and design a curriculum. The major steps taken for restructuring the curriculum includes integration of programs by stating combined degree programs along with BSc, BA, and BCom course. And the NCTE designed the curriculum by keeping 3 points in consideration as individual differences among student teachers. To meet the second point is to meet the designed objective by NEP 2020, and the third one to meet the expected standard of teacher education as recommended in NEP 2020. And I'm skipping sub point. Okay, and I'm presenting only the conclusion. The first one is NCTE designed the curriculum and gave credit wisely to each curriculum components. But in some cases, the combination of interested subject is not possible because of credit points. So it is a focus. It is a point to focus. After completing ITEP secondary level course, the student teacher will be eligible to teach 9, 10, 11, and 12 standard student. It is appreciated from the perspective of time saving. But investigators question whether the student teacher have capability after ITEP course to deal with the quality, to deal and justify the required quality. Integration and multidisciplinary concept is debatable, and no doubt it will create an impact if it is implemented as a planned properly. Therefore, the most requirement is to make all the colleges multidiscipline. It's a challenge itself. Sports, game, and cultural activity enhance teamwork spirit, group spirit, and space to work in collaboration. But on examination of the curriculum, it is found that it has no place in curriculum.
The investigator feels that how a teacher develop a holistic personality when all aspects remain missing during training. The last one, there is no doubt that ITEP course will save time and provide earlier job opportunities. But in case of a student from science stream who wanted to join medical and medical pharmacy and engineering, the challenge is here. The challenge is with regard to research on job opportunities and make the students aware of it. And second challenge is unbalanced admission in science and humanities. Thank you. Thank you. Thank you, Shabnam Parveen. It's a nice presentation. Shabnam Parveen. Now, it is with immense honor and anticipation that we invite the visionary leader of our university, the Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hasan Sir, for his presidential address on the second day of our national conference. For his formal introduction, I would like to invite Dr. Mohammad Talib Athar, Associate Professor, College of Teacher Education, Bidar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected chairs and my dear friends, Assalamu alaikum. Today is the second day of this national ITEP conference, and this session is a very graceful and memorable for us, sir. We feel honored to have with us the honorable chief guest of this session, His Excellency Professor Syed Ainul Hasan Sir, the Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University. Professor Syed Ainul Hasan Sir hardly need any introduction. Sir have made all of us proud with his distinguished work as a professor in JNU, New Delhi, before joining MANUU Hyderabad. Professor Sir Syed Ainul Hasan Sir wrote many books, research and policy papers, having a 37 years teaching experiences in higher education, and produced more than 87 researches as well. He is a great administrator and policy maker. Sir has a numerous expertise, whether it is related to language, linguistics, researches, culture, heritage, or national and international relationship, vice versa. Sir, we are very happy to have you as a chief guest at this ITEP conference. Professor Syed Ainul Hasan Sir is a person of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas. He is an idol of knowledge and experiences, and he is, of course, an inspiration to all of us. We are very thankful to you, sir, for having with us today. I considered it a great honor to welcome the honorable chief guest, His Excellency Professor Syed Ainul Hasan Sir, onto the stage with these words. फलक पर जब चमकता है आपके अज़्म का सूरज, फलक पर जब चमकता है आपके अज़्म का सूरज, when the sun of your determination shines on the sky, when the sun of your determination shines on the sky, फलक पर जब चमकता है आपके अज़्म का सूरज, उदासियाँ खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाती हैं, उदासियाँ खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाती हैं. The gloom itself sinks into the darkness. Please welcome His Excellency Professor Syed Ainul Hasan Sir. Thank you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन बेनामे खुदावंद जानो खैरत के बरतर जिनंदीश बर नगजरत. In the name of the one who has given us life and wisdom. एक तरफ जिंदगी
اور دوسری طرف دانش. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یا لائف کی ہے اور یا وزڈم کی ہے. I am caught between so many combinations, a very distinct combination. Now Professor Sadaqat Ali, صداقت, سچائی, وہ بھی علی کے ساتھ, a very distinct combination. جو بولوں گا سچ بولوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا. We are hearing. اور ٹیچر کو ہونا بھی چاہیے سچا. دوسرا کمبینیشن شاہین اینڈ الطاف. لک ایٹ لطف, لطیف, لطف اور شاہین. حافظ نے کہا تھا دیدی آن قہقہے کب کے خرامان حافظ کسی سرپنجہ شاہین قضا غافل بود. آپ نے دیکھا یہ جو ہنس تھا, ہنس کی چال مشہور ہے نا, کتنا اٹھلا کے بل کھا کے چل رہا تھا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی شاہین بھی ہے جس کے پنجے میں یہ آئے گا پھر اس کو قضا آ جائے گی. شاہین قضا غافل. ایک طرف لطف ہے, دوسری طرف شاہین ہے. امیجنری برڈ ہے شاہین. آپ بھی امیجن کرتے رہیے ان کے بارے میں. تو شاہین قضا غافل بود, وہ تو علامہ اقبال نے لیا حافظ سے, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی بلندی پر. وہ شاہین تو اقبال نے وہاں سے لیا ہے. جائگنٹک برڈ ہے. ایگل سمپل نہیں کہہ سکتے. شاہین شاہین. عقاب عقاب ہے. فینکس فینکس. ہما جس کو کہتے ہیں, ہما الگ. شاعروں نے کیا کیا ہے, یہی سب تو کیا ہے. کبھی انہوں نے پرندے لا کے سامنے رکھ دیے. کانفرنس آف برڈس, منطق الطیر عطار نے بنایا. سیمرغ, ہاں سیمرغ 30 برڈس کا کانسیپٹ بنا. تصوف میں وہ چھوڑیے اس. سو شاہین الطاف. شاہین کے بعد لطف نہیں ہے, نیچے اترنا اور پنجے میں جکڑنا. ویسے it's a wonderful combination and a teacher must be like that. Now the third combination I see here is on one hand Sultana, on the other hand Meher. اب سلطان سے کون مہر, آپ سوچ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے, جہاں سلطانہ کو مہر کی باتیں کرنے کے لیے راغب کیا جائے. And I am sure she's not only head mistress of this Shaheen group, rather, she has been devoting a lot of time. And this is, precious time. Precious time in the sense that the ignorant, absolutely, from scratch, from zero, upbringing, slowly and gradually, with all decorations, in the sense that on one hand, modern education, on the other, well, don't forget that your real path is the one which comes from holy book. That holy book is Quran. And ilm in itself, look at how it is
It begins with कि इस घर की बात है, ये फोन वोन जो है बंद कर दिया, मेरा भी आएगा मैं बंद कर दूंगा। इस घर की बात है न ये उस घर की बात है, मुफलिस की बात है न तवंगर की बात है। ताकीद पढ़ने लिखने की हर दीन में कहां, इकरा फकत हमारे पैगंबर की बात है। बिगिनिंग कहां से हो रही है? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये तालीम का मैदान तो हमारी नस नस में है, पहले दिन से हमसे कहा जाता। And all of you someday, sooner or later, will turn out to become a teacher. Because you have decided. It is your target to become a teacher. And there are certain qualities. And still, this profession is still highest regarded, I tell you. No corruption. As far as a teacher is concerned, there's a relationship between teacher and taught. And that relationship is so pure and pious relationship. There is nothing like give and take. That is simple way of dealing. It's not that you pay Guru Dakshina. What Guru Dakshina? इन नॉलेज जो टीचर दे रहा है उसके मुकाबले में क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है? कोई हमें बताए कि उसकी कॉस्ट क्या है। ये जो रिलेशनशिप होता है, उस्ताद अपने शागिर्द को जब बनाता है, संवारता है, उसको जिंदगी मिलती, हयात मिलती। इस हयात की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। हर सांस को देखेंगे, एक एक सांस कीमती है। और अगर कोई अपने इल्म को ट्रांसफर करे, ट्रांसमिट करे, सोचिए आप, उसको आप सिंपली ये मशीन से कर सकते हैं, मशीन नहीं करेगी। Someone asked me, who has been your best teacher? You know, I wanted to name a few, but then I thought, book is the best teacher. Don't give up reading. Reading is very important. As long as you continue reading, you keep making references of books, articles, writings, you will continue to remain a teacher. And that's the quality of a teacher. You know, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है लाइफ में कि जो और लोगों को हासिल हो जाएगा। हो सकता है कि आप एक छोटी सी 1-2 कमरे का घर बना लें अपनी लाइफ में और उसमें जिंदगी गुजारें, मगर ये घर उन महलों से बेहतर होगा कि जो मजदूरों का हाथ काट के बनाए गए, लोगों की लाशों पर चल के बनाए गए। वो महल उन्हीं को मुबारक जो जुल्म और तअद्दी के ऊपर थे, माइल थे। वो लोग कि जिन्होंने हर तरीके से दौलत कमाने की कोशिश की। आपकी दौलत इल्म है। ये दौलत आपकी कोई ले भी नहीं सकता, इसका कोई डिविडेंड भी नहीं है, या आपको मिलता रहता है, या आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर आती हैं। अभी इस बिटिया ने पेपर पढ़ा, शबनम परवीन ने, and it's a good effort. Now there is a sense of realization
talking about ITIP so early. What are the pros and cons of integrated teaching? I mean, that one must admire. There is a sense of realization. It's started. Somewhere, there is a realization. But my advice to you will be absolutely bindas in your research. See, if you think something is to be brought to the knowledge of others, you must. Don't hesitate. And don't say, my teacher will say, why did you write? Teacher will not say. Because healthy criticism is always fruitful. Always be healthy. Put your foot down. Don't say कि भाई अगर ट्यूटर ही होके चल रहा है तो क्या फायदा लाइफ में. You have to create something. Try to create. And never hesitate. You participate in deliberations, conferences, seminars, workshops. Put up your views. मुझे बताइए, आप लोग सब तैयार हैं कि कोई भी होगा कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जरूर अपना नाम भेजिए कि आई विश टू पार्टिसिपेट. हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहिए. आपके जहन में बात आ रही है, कुछ आपने पढ़ा, कुछ रिएक्शन है, ट्राई टू डेवलप. अपने आइडियाज टू डेवलप कीजिए. एंड दैट ओरिजिनलिटी somewhere or other pave way for your betterment, for your identity, entire identity. You know what happened? In 1983, most of you must have not born today. In 1983, it was my first paper. There was a conference, Literature in Translation. Literature in Translation. Big international. Mrs. Gandhi was supposed to inaugurate. Then could not come, you see, under certain pretext. Then the Lieutenant Governor Jagmohan inaugurated that conference, Vigyan Bhavan. I was such a student that time. But I had the courage to speak out in front of large number of scholars coming from different countries. Even a large number of Jews attended. Now there, I presented my paper on Umar Khayyam. Translation of Fitzgerald on one hand, on the other hand, what Fitzgerald extracted meanings, because Europeans are almost like that, you see. They are so materialist that they always touch upon the thing which is not in the fitness. So what happened then? Then his interpretation, my interpretation, Khayyam's interpretation, you see, triangle. And then I proved that he was greatly influenced by Buddhist philosophy. Buddhist philosophy, and I say basically the major challenge before Buddha was the sufferings, Sarvamidam dukham dukham. Wherever I cast my glance, I see nothing but sufferings. And how to bring out people from these sufferings. This was the objective of Buddha. And then he adopted, middle path, Samyak Drishti, Samyak Vyayam, Samyak Sankalpa, and Samyak Samadhi, and Samyak. This was a kind of escapism also. One say that, okay, this was not coming to the concrete question of life, rather. And there I said, because Nishapur was not very far from Bamiyan. Bamiyan, the Buddha statue, in Afghanistan. And then, so I proved my point that, well, Khayyam was also like that. Who has seen tomorrow? Whether I will survive or not. Again, very painful ideas of Khayyam. Peshar piyale rakh shab mi guzarat. Let us spend our night happily. Forget about tomorrow. Tomorrow is very painful. Young age and the old age and all these blah, blah, blah coming to Khayyam. Now what happened? I said he was
a bit closer to Buddhist philosophy. Next morning, you know, all the papers, newspapers, what they wrote, that Khayyam was Buddhist. I never said this. Not at all. God forbid. He was not a Buddhist. You see, that's how you see one should read in between lines. What I am saying, that the journalists, you see, they don't understand what a man of literature and philosophy speaks out. So they wrote, journalism is journalism. They wrote for headings, you know, Khayyam was a Buddhist. Khayyam was to write something under the influence is something else. And to become someone like that, you know, is something else. You see, one should mark the difference between the two. One should not mix up things like that. So I believe that this is the time when you can really produce something. You can write something. You can enlighten others. You will not be able to make money, I am telling you. You'll be a salaried person because you have chosen this path. Don't say that now I have to build a palatial house. No, you can't build a palatial house. I am sorry to say, this is not the way. ये रास्ता ही अलग है. इस रास्ते पर सदाकत साहब कितने मकान है आपके? वही होगा, एक बाबा दादा का होगा, एक अपना कुछ खरीदा होगा. इस पर नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो सकता. आई एम टेलिंग यू, आप जितनी ट्राई कर लीजिए, इफ यू आर ऑनेस्ट इनफ. सी दैट्स आई एम टेलिंग, टीचर इज ऑलवेज ऑनेस्ट. पता है ना, वो सब लोग यहाँ सदाकत सच्चे आदमी बैठे हैं. और अगर इनके यहाँ कहीं निकल आया, वो गिन्नियां निकल आई, तो ये समझ लिए खुदाई में निकली है. वो इनकी अपनी अर्न की भी नहीं. सोने चांदी मिल जाए समझ लिए दादा बाबा के हैं, उसी जमाने से आए हुए हैं, है ना. वरना ये तो इसको रखेंगे नहीं. कहेंगे अपने दूसरे भाइयों बहनों से कहेंगे ले जाओ, हम हमारे किस काम का है. हम ठीक है, हमारे लिए ये जो यहाँ मक्के की रोटी और सरसों का साग मिल रहा है बहुत है हमारे लिए. And I have team. कैसे कैसे टीचर्स हमने देखे हैं. 30 रुपीज सैलरी, 30 रुपीज. मेरे बचपन में बता रहा हूँ, 30 रुपए पे काम करते थे मौलवी अहमद अली, लेकिन अंदर से रोशनी निकलती थी. वो आदमी के अंदर जो है, उसके फेस से ही रोशनी पैदा होती थी. वो जब आदमी सिखाता था तो ऐसा लगता था कि वो क्या चीज सिखा रहा है. और जो सिखा दिया वो दिमागों के अंदर उतर गया, दिल में उतर गया. ये आपको काम करना है. आई टेल यू, हो सकता है आपको बड़े गरीब बच्चे नजर आए अपने सामने, जैसा कि अभी मोहतरमा मेहर सुल्ताना कह रही हैं. कदीर साहब ने क्या सोचा होगा? कदीर साहब ने सोचा होगा बिजनेसमैन है, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, दौलत होगी. नहीं, वो नहीं सोचा. रास्ता बदला. कहा दौलत तो है, मगर इस दौलत का इस्तेमाल क्या है? उसको इस्तेमाल किया. किसी और को नहीं, जिम्मेदारी अपनी बहन को दी. आइए तशरीफ लाइए, कुछ एतमाद तो होगा उनका. बहन है, गड़बड़ नहीं करेगी. कुछ गड़बड़ तो नहीं कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं. कॉन्फिडेंस भी बहन है. और अगर बहन ने गड़बड़ किया तो डांट भी लगा सकते हैं, ये काम क्यों किया, हमने तुमसे ये करने को नहीं कहा था. हमने कहा था कि प्रिंसिपल रूम बनाना, उतनी ही चेयर्स रखना जितनी उसमें जरूरत है. तुमने तो अपना यहाँ पर ऐसा बना लिया कि अब घर जाने की जरूरत ही नहीं है. मालूम सुबह जो है वो लैविश नाश्ता, और लंच में जो है वो पराठे पर पराठे, बिरयानी पे बिरयानी, शाम को भी जो है वो. ये नहीं है. आप देखिए, ये टीचर की क्वालिटी नहीं है. टीचर की क्वालिटी यह है कि हर वक्त सोचता रहे. वो अंदेशमंद है, वो सोच रहा है. वही है इन सारी बलाओं से जो दुनिया की आई हुई है उनसे निकालने वाला. जिस दिन ये खत्म हो गया, जिस दिन ये टीचर बिक गया, उस दिन दुनिया तबाह हो जाएगी. मैं आपसे बता रहा हूं.
अभी भी लोग हैं, सोने चांदी के कलम आते हैं लेकिन सोने चांदी के कलम को वो अपने पास रखते नहीं, कहते इसको हमसे जितनी दूर ले जा सको ले जाओ। एनीवे, मुझे यहाँ बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी है, मैं भी आप ही की तरह एक टीचर हूँ, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको निभा रहा हूँ। लेकिन एक बात आपसे कह के जाऊंगा, बात यहाँ बहुत सारी इंटीग्रेशन की हुई है, फकरा का तस्करा, मसाकीन का तस्करा, इस जगह से उस जगह से जोग्राफिया भी आया आपके सामने वो केमिस्ट्री भी आई कि कैसे उनको ड्रॉप आउट्स को सामने लाया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। आपके सामने हॉस्पिटल भी आ गया, आईसीयू भी आ गया, हो सकता है हमारे नाम पर ऑपरेशन थिएटर भी आ जाए। ये सारी चीजें जो है वो आपने सुनी और आपने देखी कि भाई ये कैसे कैसे वो जिक्र हो रहा है। इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट। ये जो एजुकेशन का इंटीग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रोफेसर शाहीन अल्ताफ ने कहा था कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो हमारे लिए बहुत ही कारआमद साबित हुई। देख रहे हैं आप, क्यों? इसलिए कि एक तो ये है कि उर्दू भाई लैंग्वेजेस की आजादी दी गई तो जबान हमारा फायदा हुआ। अब हमें कोई मजबूर नहीं करेगा कि हम अपनी जबान में न अपने माफी जमीर को बयान करें, वरना तो मजबूरी थी। इसमें क्यों लिखा है कौन पढ़ेगा, अब पढ़ो। इसलिए कि अब तो कहा जा रहा है कि भाई इसी पर इसको बंद कर देना, जरा सा इसको बंद कर देना, 2 मिनट, बस 2 मिनट ही में खत्म कर दें। ये जो इंटीग्रेशन है एट एवरी लेवल, you know, you have to maintain diversity. Remember, आप जैसा कि यहाँ हो रहा है, एक बच्चा है जो पूरी फीस दे के आ रहा है, एक बच्चा है कि जिसको जरूरत है उसकी फीस अदा करने की, उसकी शाहीन ग्रुप की तरफ से भी हाफ रिड्यूस हो गई, कहीं कोई किसी ने मदद की तो वहां तक पहुंचा दी गई। दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेशन। रिमेंबर, इंटीग्रेशन। और सही रास्ता यही है कि आप मदद जितनी कर सकते हैं मदद कीजिए। तीसरी बात, कभी भी जात, नस्ल, सेक्ट, इन सब की बात मत कीजिए। सब इंसान हैं और हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिसने इन सबको मिटा दिया। आई एम ग्लैड कि यहां भी लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। और मुझसे कहा गया कि 50-50, भाई इनकी तादाद 50%, तो काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने आज बहुत बड़ा काम किया है। जो बहुत पहले 1400 बरस पहले ही कहा था उसको आज आप पूरा कर रहे हैं। लोगों ने अपने घरों से लड़कियों को जाने नहीं दिया, बहुत बुरा किया। दूसरे सिटीज से आए हुए बच्चे और उनमें लड़कियां भी, उनके लिए उनका इंतजाम। हम मौलाना आजाद में ये देख रहे हैं कि 40-60 का रेशियो है, जो हमें भी 50 तक लाना है। आई एम ग्लैड। गर्ल्स आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। नेवर अंडर एस्टिमेट। मेरे बगल में अभी मैं बनारस से आया ना, हाँ बनारस से आया, कल ही आया। तो वो जो फर्स्ट ऑफिसर थी पायलट, वो एक यंग गर्ल थी। सेकंड जो थे सबऑर्डिनेट उनके, वो साइड में बैठे हुए थे। अनाउंसमेंट हुआ, एक साहब हमारे बगल में बैठे थे, वो यूं करने लगे, भगवान बचाए क्या होगा। और इत्तेफाक से वो सबा आजमी नाम था उसका, या क्या नाम था, सबा आजमी। बड़ी बात है ना, पायलट है। लेकिन इतनी खूबसूरत लैंडिंग उसने कराई कि मैंने मुड़ के कहा कि मैं बहुत दिनों बाद ये लैंडिंग देखी है ढंग की।
नहीं हंसने लगा। देखिए, नेवर अंडर एस्टिमेट, आप जहानत पर, आप उसकी फिक्र पर, उसकी अक्ल पर, उसके शऊर के ऊपर कभी भी आप हर्फ न लाइए, इसलिए कि ये बेसिक तालीम से, बेसिक टेनेट से हट के है। आप मुअज़्ज़ब हो सकते हैं। तलबल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, न कीजिए डिफरेंस। हम अपनी यूनिवर्सिटी में देखते हैं, हमने क्लब शुरू किया, लड़कियां नहीं आती थीं, हमने मोटिवेट किया, आके फिर अपनी आवाज में तराना सुनाने लगी, फिर हमने मोटिवेट किया, शायरी करने लगी। गजल लिखने का हक आप ही को है, उस तरफ आप हक नहीं देना चाहते तो आप जरूर परवीन शाकिर, फहमीदा रियाज और किश्वर नाहिद को पैदा करेंगे एक रोज, जो आके सामने कहेंगी कि डसने लगे हैं ख्वाब मगर किससे बोलिए, मैं जानती हूं पाल रही हूं सपोलिए। ये सपोलिए हैं जिनको पाल रहे हैं, जिनको बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भिगो लिए। रोइए नहीं, इनको रोने मत दीजिए, इनको इस लायक बनाइए कि आपकी आंखों में भी नमी रहे। याद रखिएगा, इनका वजूद न हो तो आपका वजूद नहीं है, मर्द अधूरा है। अल्लामा मौदूदी ने साफ लिखा है अपनी तफसीर के अंदर, साफ बयान किया। देखिए, हमारे जहनों की भी तो मशक होनी चाहिए। साफ लिखा है, men and women are parallel to each other। सूरह मायदा, सूरह निसा पढ़ के देखिए आप, तालीमात हैं हमारे यहाँ, इसको अमल में लाइए। चुन अमल दर तु नीस नादानी, if you don't put it into practice you shall remain ignorant। इसलिए they are respectful and they have equal rights to come up to your level। तो मुझे खुशी है कि आपके यहां इस तरह का है, and I am trying my best for outreach program। मैं उन औरतों को जिन्होंने शादी हो गई, बच्चे हो गए, तालीम बीच में छोड़ दी, मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं ताकि वो अपनी तालीम कंप्लीट कर लें। हो सकता है कि कोई ना कोई चीजें, मजबूरी आदमी के पास आती है, लेकिन कुदरत भी मौका फराहम करती है। तो अब पिछले बरस हमने जो एडमिशन्स किए, आपको हैरत होगी, डिस्टेंस में 5,500 लड़के आए और 8,500 लड़कियां। So this is how you see, as a teacher, I can share my views with you, but not to teach you. I'm not here to teach you. You are qualified people and you will remain qualified. Come out and integrate people. This integration is important. National integration also. हमें कोई कैनेडियन कहे हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें कोई अमेरिकन कहे हमें नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा हमें यही लगेगा कि हमें हिंदुस्तानी पुकारा जाए। हमारी आइडेंटिटी हिंदुस्तान है, हम कहीं भी रहें हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कोई चैलेंज न करे। इस मिट्टी से हमें प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा। और इसी मिट्टी में हम, जिस तरह से हमारे एंसेस्टर्स दफन हैं, हम भी इसी मिट्टी में दफन होंगे। ये खाक जिसके लिए हमने न जाने कितने सफर तय किए हैं, कितने मनाजिल से गुजरे हैं, क्या उससे अपना रिश्ता खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। मैं आपसे एक और बात कर लूं
कि मोहतात रहिएगा। जब आप किसी बुलंदी पर पहुंच जाएं तो जरा सा नीचे मुड़ के देखिएगा। मोहतात रहना, तुमको बुलंदी अगर मिले। सर तो ऊंचा होगा, मगर दूसरों को सरों को आप अगर ऊंचा नहीं करेंगे तो आप किसको देख पाएंगे? सिर्फ आप अपने आप को देखेंगे, दूसरे दिखाई नहीं देंगे। मोहतात रहना, तुमको बुलंदी अगर मिले, सर है उसी का नाम जिसे दर्द सर मिले। और जितनी तहें बनाओगे अपने लिबास में, अपने आप को डेकोरेट मत करो, दूसरों को डेकोरेट करो। जितनी तहें बनाओगे, आर्टिफिशियलिटी कभी भी पनपती नहीं है। जितनी तहें बनाओगे अपने लिबास में, इम्कान है शिकन भी तुम्हें उस कदर मिले। और फर्शे जमी पे बैठना मसनत को छोड़कर, जिस दिन तुम्हें ये लगे कि तुम वहां पर हो जहां तुम डिजर्व नहीं करते, फर्शे जमी पे बैठना मसनत को छोड़कर, पूरी कबा पसीने से जब तरबतर मिले। और कोशिश करो कि नाम न बिगड़े किसी तरह। मिलता है जिसमें जेर, वहां पर जबर मिले। अपनों ही दोस्तों से करें दुश्मनी बहम, कैसे शकर नमक में शकर मिले। ये जिंदगी का अगर रास्ता होगा, शाहीन ग्रुप एक नहीं 10-20 और पैदा होंगे। I am surprised until now we have not been able to integrate ourselves with Shaheen group, or very small way we are integrating. But from now onwards, I assure you, madam, that this will continue and we will do something with the help of each other. MANUU is a big institution. Shaheen Group is a big group. I think we will collaborate with each other and do something for our entire students and teaching community. Thank you. Thank you very much. Let us express our deepest appreciation for the enlightening and visionary presidential address delivered by Professor Syed Ainul Hasan sir. Sir's message encapsulated a wealth of insights, fostering a profound impact on our understanding, a testament to the power of brevity and depth. Congrats to a message that speaks volumes. Thank you. Thank you so much, sir. After this wonderful presidential address, we are near the conclusion of this insightful session. It's now time to express our gratitude. For this, I would like to invite Dr. D. Vishwa Prasad, Assistant Professor, College of Teacher Education, Bidar, to deliver the vote of thanks, acknowledging the collective efforts that have made this session meaningful and enriching. Respected Professor Syed Ainul Hasan, Honorable Vice Chancellor, Maulana Azad National Urdu University, esteemed guests of honor, Madam Meher Sultana, Director of Shaheen Group of Institutions, and Professor Sheikh Shaheen, Head of the Department of Education and Training, MANUU. Dear teachers and participants, good afternoon. On behalf of the entire conference organizing committee, I extend my heartfelt gratitude to each of you for your august presence here today. Honorable Vice Chancellor, sir, your profound wisdom and visionary leadership
inspire us all. We are deeply grateful for your instructive remarks and unwavering support towards fostering excellence in education and research. Sir, we are truly honored by your presence. Madam Meher Sultana, your dedication to educational quality and tireless commitment to nurturing future generations serve as an inspiration to all of us. We appreciate you for your presence here and for the invaluable contribution you have been making to MANUU CTE Bidar. Thank you, ma'am. Professor Sheikh Shaheen, our beloved head of the Department of Education and Training, your expertise, ma'am, in education is commendable. You have enriched our ideas with your inputs regarding ITEP and inspired all of us to strive for academic distinction. Thank you, ma'am. We are thankful to our principal. I should say, he's not only a principal, but the steward of MANUU College of Teacher Education, Bidar, for his unrelenting efforts to bring this event to fruition is something great, and we have to acknowledge. Thank you, sir. Honorable Vice Chancellor, sir, and the guests of honor, your presence today has added immense value to this event, and we are sincerely grateful for your time, wisdom, and encouragement. We look forward to continued efforts in a pursuit of academic excellence and societal impact. Thank you once again for your gracious presence and unwavering support. And I request the gathering for a big round of applause for all our guests. Thank you. Thank you to you too, sir. We, the teaching and non-teaching staff of College of Teacher Education, Bidar, wants to felicitate our organizing secretary. Our principal, Dr. 𝐓𝐶𝐸𝐴𝐧𝐿 sir. Sir's meticulous planning, hard work, and his dedication have made this conference into a reality. So I would like to invite our Vice Chancellor, sir, Professor Syed Ainul Hasan, sir, for the felicitation of 𝐓𝐶𝐸𝐴𝐧𝐿, sir. Please. Dear participants, as we conclude this session, I kindly request everyone to stand for the national anthem, please. May I kindly request the technical team member, Janab Ghayasuddin sir from IMC MANUU, to play the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you to all of you. We'll now be taking our lunch break. Kindly
proceed to the designated area. And we kindly request you to return to this auditorium for the engaging technical sessions scheduled for day 2 of the conference. And yes, don't forget to join sharp at 5 for our valedictory session. Thank you. Thank you so much.